हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ फिरोशन। आज हमारे साथ मौजूद है निधि और उनकी मदर आशा जी। आशा जी, निधि, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी दैट दीज आर आवर क्लाइंट्स ऑफ CakeOPedia। CakeOPedia के बारे में you all will come to know as this is what the podcast is about. So let me tell you about Nidhi first. Nidhi is a 14-year-old school-going kid जिसने CakeOPedia को स्टार्ट किया है। एंड आशा जी, हम मदर, जिनके अदर वेंचर्स भी हैं बट वो प्रॉपर इसमें निधि को सपोर्ट भी करती हैं। सो आई वेलकम यू बोथ इन आवर पॉडकास्ट। इट्स माय प्लेजर टू हैव यू टू हियर। So with your permission, should I start with my question? First of all, thank you, Vani. Thank you for having this podcast. Yes, ma'am. And really, I would love to talk with you and share a few insights about CakeOPedia and Nidhi both on this platform. Okay, thank you so much, ma'am. Okay, ma'am. So, Nidhi, can you please enlighten us about your school life and how is it going on and stuff like that? So, I'm currently in 10th grade and I study in Fountain School, Surat. And since it's 10th grade right now, there is a lot of kind of study pressure, you could say, but that's it, yeah. Okay. So, Nidhi, since you are multi-talented and multitasking girl, so apart from studies and baking, what are your interests? So apart from studying and baking, I absolutely love playing badminton. Oh, wow. It is one of my hobbies and I love to include it every day in every day. So I go to play badminton for around 2.5 hours daily. Okay. And apart from that, I also am a classical dance student. I'm currently learning Bharatanatyam. I'm in the 7th year of Bharatanatyam. And every weekend for 2 hours, I go to learn Bharatanatyam. That's brilliant to know. So the most important thing right now I'm having is, how do you manage time for everything, with everything going on in your life right now? So when I first started with CakeOPedia, it was lockdown, so there wasn't too much to manage. But then as and when the lockdown started to getting lift up, I started to get back at my extracurricular activities like badminton and Bharatanatyam slowly and gradually so that I could understand how to manage my time. So now, if you're asking me how I'm currently managing my time, I believe that when I'm more busy, I'm more efficient, because when I don't have anything to do, I'm just sitting around doing nothing. But when I have many things to do and when I'm managing when I am busy, I believe that I am becoming more efficient, and when I see more tasks that need to be get done, I do it instantly so that I think that I'll get free time later on so I can relax all at once. Okay. I think we all should implement these things in our life. That's really amazing. Okay. So, can any one of you tell me that what is the background story of CakeOPedia and how you coined its name? CakeOPedia started back in lockdown in the May of 2020. So before that, my mother, she used to take some classes called Young Entrepreneurs, where she used to inspire and encourage children my age to come up with their own business, so that they could get an experience of managing the business from a very young age. So that was the first thing that inspired me to come up with my own business venture and to do something which is not related to my academics. And then one day when I was sitting with my mother, she told me a story of Ileana Archer. She's also a young entrepreneur, but she started when she was 8 years old, and her story was the one that especially inspired me and encouraged me to do something which I was already good at or which I was already interested in. So at my house, like at my home, everyone has a street cake. And since it was lockdown, there was cake premixes which was already cake cuts made at my home by my mother. So that is how I came up with the idea. Since I was interested in baking a lot, I had this cake premix already. We had a cake premix formula. We just needed to develop it.
That is how I came up with the initial idea of starting up a business of cake premixes. And that is how the idea was born initially. And since then, there has been a lot of changes and a lot of growth in CakeOPedia. Our packaging has changed a lot. So at first, we just wanted to take a market survey of these cake premixes, and at the very beginning, in the first 2 to 3 months, the packaging was just in a lock bag, and we used to write the name of the flavors to the market by our own selves. But since then, we've had a lot of changes. After that, we had foil packets with stickers. Then we had paper bags, and now we also have boxes printed. That is a lot of growth since when we first started. Okay. Thank you so much, Nidhi. So now, Asha ji, I have to ask you that Nidhi ne to bata diya ki how she manages and everything. So how do you manage your household work and hobbies and this business all together? I mean, do you have other ventures as well? इन सब के लिए सबसे पहले सवाल ये है कि जब आपके पास बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं करने के लिए, तो यू आर मोर इफिशिएंट ऑलवेज। जैसे निधि ने भी बोला, बिकॉज देखिए हमारे पास बहुत फ्री टाइम होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब हमारी इफिशिएंसी लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है जब हमारे पास बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं करने के लिए। और आज के डेट में हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा स्क्रीन है, स्क्रीन टाइम्स है, तो हम काफी टाइम निकाल सकते हैं। और व्हाट आई मोर ऑब्जर्व इनटू सोसाइटी कि टाइम सबके पास है, बट सबको एक आइडिया, एक जो किकिंग आइडिया होती है कि हाँ ये आइडिया पे अगर हम काम करेंगे तो हम प्रोडक्टिव होंगे एंड इट विल गिव जॉब सेटिस्फेक्शन। वो आइडिया मिलने का सब वेट करते हैं। अगर वो आइडिया मिल जाए तो एवरीवन इज कैपेबल, एवरीवन हैज अ पोटेंशियल, हर कोई ये चीज इजीली कर सकता है। जी जी जी। तो मतलब आई थिंक कि एवरीवन इज यूनिक, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द आइडिया एंड वर्क ऑन दैट आइडिया। सो ये सारी चीजें मैनेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम कर सकते हैं हमारे काम के साथ में। तो मैं भी कर पा रही हूँ, और ये तो मेरी डॉटर का आइडिया है। एंड आई हैव दैट थॉट कि कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को कोई भी एज में कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो सपोर्ट करते हैं। तो अगर मेरी डॉटर 13-14 इयर्स के एज में कुछ करना चाह रही है तो ऑब्वियसली मुझे उसे सपोर्ट करना ही चाहिए। शी नीड्स लिटिल मोर सपोर्ट बिकॉज उसके पास काफी टास्क है ऑलरेडी। कभी कभी मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बिजी वो है, बिकॉज उसके स्कूल्स होते हैं, उसके स्कूल के होमवर्क होते हैं। शी प्लेज बैडमिंटन, शी डू भरतनाट्यम, शी मतलब वो बहुत सारे रनिंग चैलेंजेस भी लेती है। तो सबके साथ में वो भी बहुत कुछ करती है। तो ऑब्वियसली एज ए पेरेंट ये मेरा रोल है कि मैं उसे 100% सपोर्ट करूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। तो निधि, आप कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द फेवरेट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन? यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस दैट यू डू सेवरल थिंग्स एट अ टाइम, so what is your favorite part of your daily routine? So if you ask me, I love my whole day. I love doing everything that I'm doing, but the most favorite part of my day is playing badminton. When I am playing badminton, I feel like it is a meditation for me. I'm not concerned about anything else, and it relaxes my mind so much. And since there's a lot of things going in my mind for the rest of the day, so like for studies and for CakeOPedia, when I'm playing badminton, there is nothing going on in my mind except playing badminton, and that is why I feel that badminton is my most favorite part of the day. Okay. It really helps me figure out like the rest of the day and just calm my mind down and get ready for the rest of the day. Okay. And who or what inspires you to work hard regularly like this and make things like this happen? My inspiration has always been my mother. She works really hard every day, and even before we started off with CakeOPedia, she used to work hard, and she used to manage a lot of things together, and she has always been my inspiration to work hard and to do more things every day, and she is still my inspiration since we started CakeOPedia. And so now that I'm in 10th grade, I have a lot of study pressure, so she's just managing most of the CakeOPedia work,
and I'm really, really thankful for that, and I'm really grateful to my mother that she is supporting me so much right now, and she's managing and helping me so much in the work of CakeOPedia as well. Yeah, it should be. So since you have mentioned all these things, please tell me about the contribution of your mother in CakeOPedia and in your life and the impact it left. What are they? So as I said that she does really help a lot. She helps out a lot in my CakeOPedia work right now because of my study pressure, and her contribution in my life has always been a very impactful one. She's always there to support me. She's always there to guide me. She always shows me the right path. She always helps me through everything, even in my studies, even in my badminton, even in CakeOPedia, even in my Bharatanatyam classical dance. She's there for me everywhere. And whatever she's doing for me, I'm very, very thankful for it. Kya baat hai. So Asha ji, knowing all these things, how proud it feels to see your daughter doing such an amazing job at such young age. I mean, if I were doing such things, my mother would be definitely on cloud 9. So how do you feel about it? Yeah, really. I'm really a blessed mother. मुझे निधि जैसी डॉटर मिली. इनफैक्ट मेरा सन है जो निधि से बड़ा है, 11th में है. आई एम रियली ब्लेस्ड मदर फॉर बोथ ऑफ माय किड्स. भगवान ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं. दे आर रियली वेरी प्रोएक्टिव. मतलब बहुत ज्यादा मुझे उनको कुछ भी गाइड नहीं करना पड़ता है. दे स्टडीज ऑन देयर ओन, दे वर्क ऑन देयर ओन. जैसे निधि का एक वेंचर है CakeOPedia का, वैसे ही मेरा सन है. समटाइम्स जब भी जिसके पास फ्री टाइम होता है, ही कीप्स ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट इवेंट्स एक्सेट्रा. सो एंड देखो, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है कि इतने अच्छे बच्चे हैं. आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दिस. Okay. So can any one of you tell me that what are the long-term goals and USP of CakeOPedia? जो अभी तक हमारा CakeOPedia का जर्नी है वो बहुत असम है. हमने सिंपल लॉकबैक से स्टार्ट किया था, सिंपल फ्रेंड सर्कल से स्टार्ट किया था. राइट नाउ वी हैव अ नाइस कस्टमर बेस. ऑल इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स हम कुरियर करते हैं. और साथ में अराउंड 15 to 20 स्टोर्स हो गए हमारे विदिन सूरत, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. तो डाउन द लाइन में 3 साल से ज्यादा बच्चे 5 साल के बारे में बताना चाहते हैं. तो उसमें ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया जो मेजर सुपर स्टोर्स हैं, 5 years में मिनिमम मेट्रोज जो भी है वहाँ के जो मेजर सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए. और लोग वो ऑल ओवर इंडिया हम कुरियर से कहीं पर भी शिप कर पाए. ये हमारे गोल्स हैं. और CakeOPedia को हम एक हाउस होल्ड नेम बनाना चाहते हैं कि जब भी किसी को भी केक खाना है, केक बनाना है, तो उसको CakeOPedia याद आना ही चाहिए. CakeOPedia का प्रीमिक्स उनको इजीएस्ट और हेल्थीएस्ट लगना ही चाहिए. द मेन पर्पज कि हम हेल्दी डेजर्ट्स उनको इजीली प्रोवाइड कर पाए, और वो भी बजट में. मतलब हमारे सारे प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली है. मतलब आपके पॉकेट में तो बहुत इजीली आप 100 रुपीज से हमारे प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं. तो कोई भी 500 से 600 ग्राम का केक 100 रुपीज में बना सकता है अपने घर पे. तो हर घर हमारा केक मिक्स पहुंचे, यही हमारा गोल है. क्या बात है, बहुत बहुत खूब. And any awards or honors that CakeOPedia has achieved so far? You'd like to tell us? No. अभी तक हमने ऐसा मतलब बहुत कुछ है ना इन सब चीजों में इन्वॉल्व हुए नहीं है. वी आर जस्ट वर्किंग विथ आवर बिजनेस मॉडल और ग्रेजुअली इसको हम ग्रो करने पे ही है अभी. बहुत ज्यादा उस टाइप के अनाउंसमेंट अभी हमने किए ही नहीं है. ग्रेजुअली ये ग्रो होए, बस यही हमारी अभी ख्वाहिश है. So how do you feel when your hard work get paid off like this? I mean, you all are working so hard. So how do you feel? There is long way to go. Yeah, yes. अभी there is long way to go. बस काम करते जाओ, फल की आशा मत करो. क्या बात है मैम. Okay, can you also tell us about your product? इसके बारे में मैं रियली डिस्कस करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ. जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 100% व्हीट बेस्ड है, जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, और जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं. जो फ्लेवर्स अवेलेबल है वो वनीला है, चॉकलेट्स हैं एंड कॉफी फ्लेवर्स है. और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो
जैगरी शुगर में भी अवेलेबल है और जिनको हेल्दियर केक्स खाने हैं। जैसे अगर आप डाइट पे हो या आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आपके लिए रिफाइंड शुगर के जगह आप जैगरी शुगर वाले केक के रिप्लेस ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली उनके टेस्ट, टेक्सचर सब कुछ बहुत अमेजिंग आते हैं। एंड हमारे पास ऐसे रिव्यूज है कि लोगों को बिलीव नहीं होते हैं कि ये जैगरी के केक प्रीमिक्सेस ऐसे हो सकते हैं। राइट। और जो हम फ्लोर यूज करते हैं उसमें हम लोग व्हीट है, रागी है, ओट्स है, ये सारे फ्लोर्स में अवेलेबल होते हैं। और सारे प्रोडक्ट जो है 100% हेल्दी है और 100% प्रिजर्वेटिव फ्री है। तो ये जो नो प्रिजर्वेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, इसके साथ स्टिक रहने के लिए हमें कभी कभी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि हमेशा हमें फ्रेश बनाना पड़ता है। हमारे डेली प्रोडक्शन में होते हैं क्योंकि हम उसको ज्यादा दिन हम रख नहीं पाते हैं। बट लोगों को ये प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स मिले, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। So ma'am, do you have a team or everything is managed by you both only? We have a small team of 4 to 5 people. जो हमारे यहाँ ना प्रोडक्शन देखते हैं एंड वी आर इनटू मार्केटिंग टीम। तो हमारी 5 जनों की टीम है जो सब कुछ मैनेज करती है। Okay, that's good to know. So now that you have told us about it, where do you see CakeOPedia in say 3 years down the line? तो मैंने आपको ये पहले भी बताया कि मतलब हमारी ये इच्छा है कि मेट्रो जो भी हमारे ऑल ओवर इंडिया मेट्रो सिटीज के हर सुपर स्टोर में हमारे प्रोडक्ट्स प्लेस हुए और कस्टमर्स को भी इजीली अवेलेबल हुए। हम यही चाहते हैं CakeOPedia के साथ में कि ये जो प्रीमिक्सेस है वो हर किसी को इजीली अवेलेबल हो और लोग इसको जाने। हेल्दी केक्स के लिए लोग हमेशा इसको बाय करें। जी जी, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। आप ऐसे चाह रहे हो तो हम भी यही विश करेंगे कि आपकी भी विशेज ऐसी पूरी हो जाए। तो मैम मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एनी मैसेजेस आप किसी भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, जो भी आप देना चाहें या कहना चाहें उनके लिए कुछ? आई रियली बिलीव दैट कि एवरीवन इज यूनिक। बहुत बार यंग स्टूडेंट्स जो है ये नहीं समझ पाते हैं कि उनमें क्या यूनिक टैलेंट है। हर बच्चे के अंदर कुछ डिफरेंट टैलेंट है, बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं। हर बच्चा स्टडीज में ब्रिलियंट होना जरूरी नहीं है। आपका टैलेंट यंग एज पे पहचानो। बहुत बार मैंने ये देखा है कि एट द एज ऑफ 24-25 जब पीपल स्टार्ट वर्किंग, मुझे बहुत बार ये क्लैरिटी आती है कि मेरा जो पैशन है और मैं जो कर रहा हूँ दैट इज टोटली डिफरेंट। और फिर है ना वो अपने काम के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सो द यंग एज इज अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, बिकॉज उस समय पे बहुत बार ऐसा होता है कि हर कोई जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो ही जब कोई भी चीज स्टार्ट करे। बट जब आप यंग एज पे स्टार्ट करते हो तो देयर इज मोर अपॉर्चुनिटीज कि आप फेल हो रहे हो स्टिल यू कैन स्टार्ट अगेन। राइट। सो आपको ना जो टाइम स्पेन है ज्यादा मिलता है अपने हॉबीज को, अपने पैशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज के टाइम में सबके पास इतना स्पेयर टाइम होता है कि अपने स्टडीज के साथ में, अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के साथ से आप ऐसे एक्टिविटीज को कर पाओ। एंड आई एम वॉचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स नियर माय जो कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं एंड दे आर डूइंग दिस सक्सेसफुली। और बहुत जन फेल भी होते हैं, बट फेलियर इज पार्ट ऑफ अ लर्निंग। आप करो, सीखो, आगे बढ़ो। तो दिस इज निधि, आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इफ यू विलिंग टू डू एनीथिंग, you just do it and you don't need to think about what others will think, what your peers will think, because once you start it, you'll feel that truly you don't need to really think about what others think. And also that when there's a will, there's obviously a way for it. And if you start doing something, you'll obviously find a way to succeed. True that. बिल्कुल सच कहा आपने निधि एंड आशा जी। And so with this, I'd like to wind up now our
podcast. And thank you so much, Nidhi and Asha ji, for joining us, for giving us your valuable time. मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपको जान करके. I really hope कि हमारे listeners को भी बहुत मजा आया होगा और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. मैं चाहूंगी ऐसे और भी बहुत से लोग आएं. So thank you so much guys for listening it so patiently. This was Nidhi and Asha ji with us, the owner of CakeOPedia, जिन्होंने हमें बताया अपने struggles, अपनी philosophy, अपनी life के बारे में और कैसे इन्होंने अपने स्टार्टअप को आज एक ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश किया है. हम अगली बार मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ with more inspiring people. So stay tuned. Thank you so much for your time. Until then, take care. Cheers.